Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, dear students of class first year. I hope you are all doing well. Welcome to today's English class. Today we are going to begin chapter number 2, Responsibilities of Youth in Nation Building. Look at the title of this chapter. सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ यंग पीपल इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. So please pay close attention, take notes and actively participate in the discussion. By the end of today's lecture, you will have a strong understanding of the first half of the chapter and its major themes. Look at these main points. Freedom does not mean doing whatever one likes. कायदे आज़म फ्रीडम को डिफाइन कर रहे हैं, ट्रू फ्रीडम को, कि ट्रू फ्रीडम हरगिज इस चीज का लाइसेंस नहीं है कि आप अपना बिहेवियर जैसा मर्जी रख लें without any limits or responsibility. बल्कि ट्रू फ्रीडम मीन्स enjoying our rights while respecting the rights of others. और इसके अलावा आप अपने तमाम लॉज ऑफ कंट्री को ओबे करते हैं. एक डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम जो है ये नेशन प्रोग्रेस में हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट ही वांट्स टू से कि यंग पीपल एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग में. और इसके अलावा they can serve their country through education, hard work, honesty, किसी भी तरह से innovation या community service से. हर positive contribution, no matter कितना ही छोटा क्यों ना हो, but it helps strengthen the nation. Number 3, वो struggle जो कि हमने freedom को हासिल करते हुए की. It demanded courage, determination and a fighting spirit. एक militant spirit की जरूरत होती थी, destructive spirit की जरूरत थी उस टाइम पर. बट आफ्टर अचीविंग फ्रीडम हमारा जो रियल चैलेंज तब स्टार्ट हुआ. एक बिल्डिंग डेवलपिंग अ कंट्री, डेफिनेटली उसके लिए हमें अब कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, सच एज एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और इस तरह से यूनाइटेड नेशनल यूनिटी की. नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्थ एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आई और डेफिनेटली बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मुसलमानों को मिली. The creation of Pakistan transformed the lives of Muslims of the subcontinent. Definitely, it gave them freedom, a separate identity, but it also gave them opportunities to shape their own future. Independence opened new avenues. किस चीज के लिए avenues open हो गए थे? For progress, self-reliance and national development. लेकिन इसके साथ साथ it placed great responsibilities on the shoulder of especially youth. नेक्स्ट में कायदे आजम इस चीज को बहुत ज्यादा अर्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो तमाम आउटडेटेड थिंकिंग जो कॉलोनियल मेंटालिटी से रिलेटेड थी उसको छोड़ दें, अबंडन कर दें. और उन्होंने यूथ को ये एडवाइस किया कि उन्हें अब एक न्यू इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव माइंडसेट अडॉप्ट कर लेना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. नेक्स्ट में वो बात करना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है अब. डेफिनेटली पाकिस्तान अर्जेंटली नीड्स एजुकेटेड एंड टेक्निकली स्किल्ड पीपल. एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज्यादा अब इसेंशियल हो चुकी हैं फॉर प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की. नेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने हाथ से काम करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो शेम. हर तरह का काम बहुत ही ऑनेस्ट अगर है, every kind of honest work, तो वो respectable भी होगा and it plays an important role in building a strong society as well as strong economy. नेक्स्ट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्पेशली स्टूडेंट्स को डिपेंड नहीं करना है only on government jobs. They should explore different career opportunities such as business, trading, commerce and right now freelancing, entrepreneurship and technical fields too. Last point is personal success. आपकी हमेशा it should go hand in hand with service to the state. एक true successful person वही होगा जो कि हमेशा positively progress और nation की welfare में contribute करता रहेगा. So come to the chapter now. Let's take a start from the first paragraph. Look at the text. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me
that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. Mr. Chancellor, ख़वातीनो हज़रात, जब मुझसे राब्ता किया गया वाइस चांसलर की जानिब से कि मैं तकसीम असनाद की तकरीब से खताब करूं, I made it clear to him, मैंने उन पर ये वाज़ह कर दिया that there were so many calls on me कि मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मेरी बहुत सी मसरूफियात हैं, that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects, कि मैं मुमकिना तौर पर तैयार नहीं कर सकता एक रस्मी तकसीम असनाद की तकरीब से खताब तालीमी सतह पर with regard to the great subjects अजीम मज़ामीन से मुताल्लिक with which university deals जिनसे एक जामिया वाबस्ता है या जामिया पढ़ाती है, मिसाल के तौर पर जैसा कि सच एज फ़नून लतीफ़ा, तारीख, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून एंड सो ऑन और इसी तरह के दूसरे मज़ामीन। जनाब चांसलर ख़वातीनो हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे तकसीम असनाद की तकरीब से खताब करने की दरख्वास्त की, तो मैंने उन पर वाज़िया कर दिया था कि मेरे ज़िम्मे इस कदर मसरूफियात और जिम्मेदारियां हैं कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं जामिया के उन अजीम इल्मी मज़ामीन के बारे में जिनसे ये इदारा वाबस्ता है एक बाकायदा और इल्मी नोयत के खताब तैयार कर सकूं। इन मज़ामीन में फ़नून, तारीख, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह शामिल हैं। I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion. मैंने ताहम उनसे चंद अल्फाज, तालिब इल्मों से चंद अल्फाज कहने का वादा कर लिया था उस मौके पर। मैंने ताहम उस मौके पर कुछ तालिब इल्मों से चंद अल्फाज कहने का वादा कर लिया and it is in fulfillment of the promise, और ये उसी वादे की तकमील है that I will address you now, कि मैं अब आपसे खताब करूंगा। First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which she referred to me. सबसे पहले let me thank, मुझे शुक्रिया अदा करने दीजिए वाइस चांसलर का उन तारीफी कलमात के लिए जिसमें या जिनसे उन्होंने मेरा जिक्र किया है। सबसे पहले जिन तारीफी कलमात से उन्होंने मेरा जिक्र किया उसके लिए मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करने दीजिए। Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty, which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selflessly. Mr. Vice Chancellor, मैं जो कुछ भी हूँ और मैं जो भी करने के काबिल रहा हूँ, मैंने ये महज अपनी एक मेजर ऑफ ड्यूटी यानी एक सिर्फ मैंने अपना काम की जिम्मेदारी समझकर किया है जो कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौसी बेगर्जी से खिदमत करे। मिस्टर वाइस चांसलर, मैं जो कुछ भी हूँ या मैं जो कुछ भी रहा हूँ, मैं जो कुछ भी करने के काबिल रहा हूँ, मैंने ये महज अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है जो कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौसी से खिदमत करे। In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. आपसे मुखातिब होते हुए I am not here speaking to you, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ as head of the state, रियासत का सरबराह होने की हैसियत से, but as a friend, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ and as one who has always held you in affection, और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जिन्होंने हमेशा आपके साथ मोहब्बत का मामला, शफकत का मामला रखा है या जो हमेशा आपसे मोहब्बत और शफकत का ताल्लुक रखता आया है। Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. आप में से बहुत से लोगों ने आज अपने डिप्लोमे और डिग्रियां हासिल कर ली हैं या कर चुके हैं और मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ। Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने आज अपनी कामयाबियां, अपनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं
اپنے جامعہ میں اینڈ qualified yourselves اور خود کو سند یافتہ بنا لیا ہے. So I wish you all success in the wider and the larger world. اس لیے میں آپ کو میں خواہش مند ہوں آپ کے لیے کامیابی کا in the wider اس وسیع اور عظیم تر دنیا میں that you will enter جس میں اب آپ داخل ہوں گے یا قدم رکھیں گے. تو میں آپ کے لیے اس عظیم اور وسیع تر دنیا میں کامیابی کا خواہش مند ہوں جس میں اب آپ اپنے قدم رکھیں گے. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. آپ میں سے بہت سے لوگ اب اپنی تعلیمی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور اب زندگی کے دہلیز پر کھڑے ہیں، زندگی کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، یعنی عملی زندگی کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors، آپ کے آباء و اجداد کے unlike برعکس، آپ کے پیشروؤں کے برعکس. You fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. آپ خوش قسمتی سے لیو چھوڑتے ہیں اس جامعہ کو، ایسی زندگی میں داخل ہونے کے لیے خوش قسمتی سے آپ اپنے جامعہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں under a sovereign independent state of your own. اپنی خود مختار آزاد ریاست میں داخل ہونے کے لیے آپ اس یونیورسٹی کو خوش قسمتی سے چھوڑنے جا رہے ہیں. It is necessary that you and your other fellows students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی طالب علم مکمل طور پر سمجھ جائیں ان پوشیدہ مقاصد کو جو کہ انقلابی تبدیلی کے ہیں، جو قیام پاکستان کے وقت رونما ہوئے. ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی طلبہ اس انقلابی تبدیلی کے پوشیدہ اثرات، پوشیدہ مقاصد کو پوری طرح سمجھیں جو پاکستان کے قیام کے وقت رونما ہوئیں. We have broken the shackles of slavery. ہم ہتھکڑیاں توڑ چکے ہیں غلامی کی، ہم نے غلامی کی ہتھکڑیوں کو توڑ دیا ہے. We are now a free people. ہم اب آزاد لوگ ہیں. Our state is our own state. ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. ہماری حکومت our government is our own government. ہماری حکومت اپنی حکومت ہے of the people جو کہ لوگوں کی ہے. Responsible to the people of the state. ریاست کے لوگوں کی ذمہ دار ہے. And working for the good of the state. اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے، کرتی ہے. Freedom, however, does not mean license. آزادی تاہم ایک اجازت نامہ نہیں ہے، یعنی منمانی کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہے. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interest of the other people and or of the state. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسا مرضی برتاؤ رکھیں جو کہ آپ کو خوش کرے اور وہ کام کریں irrespective of the interest، مفادات سے بالا تر ہو کر، لحاظ کیے بغیر of other people، دوسروں لوگوں کے، اور of the state یا ریاست کے دوسرے لوگوں کے مفادات کا لحاظ کیے بغیر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق برتاؤ کریں اور جو چاہیں کرتے پھریں، خواہ اس سے دوسرے لوگوں یا ریاست کے مفادات کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے. A great responsibility rests on you and on the contrary. ایک بہت بڑی ذمہ داری اب آپ پر عائد ہوتی ہے and on the contrary، اور اس کے برعکس. Now more than ever، اب پہلے سے کہیں زیادہ it is necessary for us، ہمارے لیے یہ ضروری ہے to work as a united، کہ ہم متحد ہو کر and disciplined nation، اور ایک منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں. ایک بڑی ذمہ داری اب آپ پر اس کے برعکس، پہلے سے کہیں زیادہ اس کے برعکس ایک بہت بڑی ذمہ داری اب آپ پر عائد ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ متحد اور منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں. For us، ہم سب کے لیے ضروری ہے. What is now required of us all it is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. اب ہم سے کیا چیز مطلوب ہے، کیا چیز ہم سے درکار ہے
ہم سب سے اب یہ چیز درکار ہے کہ ہم تعمیری جذبہ رکھیں، نہ کہ جنگجویانہ جذبہ رکھیں ان دنوں والا جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ It is far more difficult to construct than to have militant spirit. یہ کہیں زیادہ مشکل ہے تعمیری جذبہ رکھنا، تعمیر کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے اس جنگجویانہ جذبے سے جو کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ It is easier to go to jail or fight for freedom. یہ آسان ہے کہ ہم جیل چلے جائیں یا پھر آزادی کے لیے لڑیں than to run a government. ایک حکومت کو چلانے سے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم جیل چلے جائیں یا آزادی کے لیے لڑیں۔ Let me tell you something of the difficulties that we have overcome. مجھے اب وہ چند باتیں آپ کو بتا لینے دیجئے جس پر ہم نے قابو پا لیا ہے اور of the danger یا ان خطرات پر جو ابھی ہمارے آگے موجود ہیں۔ Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thwarted, ناکام ہو کر، in their desire، اپنی خواہش میں ناکام ہو کر، to prevent the establishment of Pakistan، روکنا، establishment of پاکستان، قیام پاکستان کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہونے کے بعد یا ہونے پر ہمارے دشمنوں نے turn their attention، اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے to finding ways، ایسے ذریعے اور طریقے تلاش کرنے میں کہ وہ ہمیں کمزور کر دیں اور تباہ کر سکیں۔ پاکستان کے جب ہمارے مخالفین پاکستان کے قیام کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو گئے، یعنی پاکستان کے قیام کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہونے کے بعد ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ ایسے طریقے اور ایسے ذرائع، ایسے ان طریقوں اور ذرائعوں کی تلاش پر مرکوز کر لی، مبذول کر لی، جس سے وہ ہمیں کمزور اور تباہ کر سکیں۔ Thus hardly had the new state come into being. بس ابھی بمشکل ہی ایک نئی ریاست وجود میں آئی تھی، نئی ریاست قائم ہوئی۔ When came the Punjab and Delhi Holocaust، جب پنجاب اور دلی کی تباہی کا واقعہ رونما ہو گیا یا ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Thousands of men، ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے were mercilessly butchered، بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیے گئے، اور کئی لاکھوں لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا ان کے گھروں سے، اور کئی لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ Over 50 lakhs of these arrived in Punjab. Over 50 lakhs، 50 لاکھ سے اوپر لوگ of these، ان میں سے arrived in پنجاب، پنجاب پہنچ گئے within a matter of weeks، چند ہفتوں کے اندر اندر۔ Over 50 lakhs of these، ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ چند ہفتوں کے اندر اندر پنجاب پہنچ گئے۔ The care and rehabilitation، خیال اور بحالی، ریکوری of these unfortunate refugees، ان بدقسمت مہاجرین کے خیال، اور بحالی stricken in body and in soul، جو کہ جسمانی اور روحانی طور پر زخم خوردہ تھے، زخمی تھے۔ presented problems، انہوں نے ایسے مسائل پیش کیے، یعنی ان کی خیال اور ان کی بحالی نے جو کہ جسم اور روح میں زخم خوردہ تھے، جسمانی اور روحانی طور پر زخم خوردہ تھے، ایسے مسائل پیش کیے which might well have destroyed many a well established state، جو کہ کسی بھی well established might کر سکتی تھی، might well have established، might well have destroyed، تباہ کر سکتی تھی کسی اچھی خاصی قائم شدہ ریاست کو بھی تباہ کرنے کے لیے کافی تھی یا اسے تباہ کر سکتی تھی۔ ان بدقسمت مہاجرین جو کہ جسمانی اور روحانی طور پر زخم خوردہ تھے، ان کے خیال اور بحالی نے ایسے مسائل پیش کیے جو کہ کسی بھی اچھی خاصی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے یا انہیں تباہ کر سکتے تھے۔ But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. But those of our enemies، لیکن وہ ہمارے دشمن who had hoped، جنہوں نے امید رکھی تھی to kill Pakistan، پاکستان کو ختم کرنے کی
at its very inception, बिल्कुल आगाज में ही, by these means, ऐसे जराए के जरिए, were disappointed, वो मायूस हो गए. लेकिन हमारे दुश्मन जिन्होंने इसके क़याम के आगाज में ही, पाकिस्तान के क़याम के आगाज में ही इसको खत्म कर देने की उम्मीद रखी थी, उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस सदमे, शॉक, टर्मोइल, सदमे ऑफ दैट अपहेवियल, इस बहुत बड़े हंगामे, हलचल के सदमे को बर्दाश्त कर लिया, यानी उसमें रह लिया, उससे बच गए, बट ऑल्सो इट हैज इमर्ज, बल्कि ये नमूदार हुआ, स्ट्रॉन्गर, मजीद मजबूत होकर, सुधरा बनकर, मजीद तैयार होकर, मजबूत मुस्तहकम होकर, एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर, और पहले से कहीं ज्यादा सलाहियतों से लेस होकर नमूदार हुआ, बल्कि ये पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर तौर पर तैयार होकर उभरा. बेटर इक्विप्ड, बेहतर होकर तैयार होकर या सलाहियतों से लेस होकर उभरा. There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipments, and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your province. There followed in rapid succession, और उसके बाद हुई, there followed यानी उसके बाद, तेजी से, rapid तेजी से, succession एक के बाद दूसरी, यानी एक के बाद दीगरे दूसरी मुश्किलात पेश आई. Such as withholding by India of our cash balances, जैसा कि कैश बैलेंसेस, हमारे नकद जखायर को withholding, रोक लेना, of military, of our share, और हमारा हिस्सा, of military equipment, फौजी साजो सामान में हमारे हिस्से को रोक लेना, and lately, और हाल ही में, the institution of an almost completely economic blockade, मुकम्मल तौर पर नफाज, institution नफाज of an almost complete economic blockade, एक तकरीबन मुकम्मल तौर पर माशी ब्लॉकेड, नाकाबंदी का नफाज, institution नफाज of your province, आपके सूबे में. इसके बाद there followed in rapid succession other difficulties, के बाद दीगरे दूसरी मुश्किलात सामने आई या पेश आई, जैसे भारत की जानिब से, बाय इंडिया, भारत की जानिब से हमारे नकद ज़खायर और फौजी सामान के हिस्से को रोक लेना, और हाल ही में हमारे सूबे में तकरीबन मुकम्मल इक्तिसादी नाकाबंदी का नफाज. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. I have no doubt, मुझे कोई शक नहीं, that all right-thinking men, कि ये तमाम सही सोच रखने वाले लोग in the Indian Dominion deplore, in the Indian Dominion, भारतीय रियासत के, deplore तमाम नामंजूर कर देते हैं या उस चीज को अप्रूव नहीं करते हैं, भारतीय रियासत के तमाम अच्छी सोच रखने वाले लोग, ऑफ दीज हैपनिंग्स, इन वाकयात पर अफसोस करते हैं. मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि अच्छी सोच रखने वाले लोग, भारतीय रियासत के अच्छी सोच रखने वाले लोग इन तमाम वाकयात पर अफसोस करते हैं या इन्हें नामंजूर करार देते हैं. एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, और मुझे यकीन है कि जहनी रवैया that has been responsible for them will change, जो कि इस तरह से इन चीजों का जिम्मेदार रहा है, will change, बदल जाएगा. I am sure, और मुझे यकीन है कि वो जहनी रवैया जो इन चीजों का जिम्मेदार रहा है वो बदल जाएगा. But it is essential, लेकिन ये जरूरी है, that you should take note of these developments, कि आप इन तमाम developments, happenings, कि आप इन तमाम वाकयात को ज़ेरे गौर रखना चाहिए, कि इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए. दे स्ट्रेस, क्योंकि ये चीजें अहमियत पर जोर देती हैं. ये तमाम हालात जो हैं इस बात की अहमियत को वाज़िया करते हैं, ऑफ कॉन्टिन्यूड विजिलेंस ऑन अवर पार्ट, कि हम अपनी तरफ से मुसलसल होशियार और चौकन्ने या मुहतात रहें.
They stress the importance of continued vigilance on our part. ये वाक्यात हमारे इस बात की अहमियत पर जोर देते हैं कि हम अपनी तरफ से मुसलसल होशियार, चौकन्ने और मोहतात रहे. Your main occupation should be in fairness to yourselves. हमारा बुनियादी काम, मशगला, अव्वलीन जिम्मेदारी should be in fairness to yourselves. ये होना चाहिए कि हम खुद से इंसाफ करते हुए, in fairness to your parents, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए, and indeed in fairness to the state, और दर हकीकत इस रियासत से इंसाफ करते हुए, to devote your attention solely, अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मरकूज करें, मुकम्मल तौर पर हम अपने आप को वक्फ करें, सोलली मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम के लिए हम अपने आप को वक्फ कर दें. आपका अव्वलीन मकसद ये होना चाहिए कि खुद के साथ इंसाफ करते हुए, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए और दर हकीकत रियासत के साथ इंसाफ करते हुए आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम के लिए वक्फ कर दें या अपनी तवज्जो को अपनी तालीम के लिए वक्फ कर दें. It is only thus that you have equipped yourselves for the battle of life that lies ahead of you. ये सिर्फ इसी तरह से मुमकिन है कि आप लेस कर सकते हैं खुद को, तैयार कर सकते हैं खुद को जिंदगी की जंग के लिए, फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, जिंदगी की जंग के लिए, दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो कि आपके सामने दरपेश है. सिर्फ इसी अंदाज से आप खुद को जिंदगी की जंग के लिए इक्विप लेस कर सकते हैं जो कि आपके सामने खड़ी है, जंग जो आपके सामने पेश है, दरपेश है. ओनली 10, सिर्फ इसी सूरत में, सिर्फ इसी तरह से, यू विल यू बी एन एसेट, आप एक असासा होंगे, आप एक सचश्मा होंगे, कीमती सरमाया होंगे, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और एक जरिया होंगे ताकत का, एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट, अपनी रियासत के लिए फखर और ताकत का जरिया इसी अंदाज में आप बन सकते हैं. सिर्फ इसी सूरत में आप अपनी रियासत के लिए कीमती सरमाया, ताकत का सरचश्मा और बायसे फखर बन सकते हैं. ओनली 10, सिर्फ इसी तरह से, कैन यू असिस्ट, आप मदद कर सकते हैं, इट इन सॉल्विंग द ग्रेट, हल करने में अजीम, बहुत बड़े समाजी और इक्तिसादी मसाइल को हल करने में आप सिर्फ इसी अंदाज में मदद कर सकते हैं. दैट कन्फ्रंट इट, जो कि ये इसे जिसका सामना है, यानी इट मीन्स स्टेट, जिसका हमारी रियासत को सामना है, एंड इनेबल इट, और इसको काबिल बना सकते हैं कि वो पहुंचे इट्स डेस्टिन्ड गोल, अपने मुकर्ररा मकसद तक पहुंच जाएं. अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता, तरक्की पसंद, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट और मजबूत तरीन अकवाम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, और इसे दुनिया के इंतहाई तरक्की पसंद और मजबूत तरीन अकवाम के दरमियान अपनी मुकर्ररा मंजिल तक पहुंचने के काबिल बना सकते हैं. With this, we conclude today's lesson. Thank you for watching and learning with me. May Allah grant you success, confidence and excellence in all your endeavors. Take care, keep studying, and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.